और एमएससी जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड यूनिट है, पेपर नंबर 423। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। टैक्सोनॉमी एंड देयर टूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हम जब पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, तो टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी हम इफ टैक्सोनॉमी को डिवाइड कर देंगे तो दो वर्ड होंगे, टैक्सिस और नोमस। टैक्सिस मीन्स कौन? अरेंजमेंट। नोमस मीन्स लॉ। तो अरेंजमेंट मीन्स कौन? आमे हमर एनिमल अछंती, एनिमल मानकर क्लासिफिकेशन भी अछि। आमे एते गुडी एनिमल अछंती, सब एनिमल को हम जानि परिबे कि? तो तार निहाती क्लासिफिकेशन दरकार। तो आमे क्लासिफिकेशन देखिबा को गले क्लासिफिकेशन को कौन पे आमे करूछंती ना करूछंती आमे एनिमल गुडी कर कोन भल से तांग चिन्हिबा, जानिबा, आइडेंटिफाई करिया पे। तो जो हमर टैक्सोनॉमी वर्ड जो दुईटा वर्ड आसला, गोटे टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट और गोटे नोमस मीन्स लॉ। It is the branch of biology which deals with the study of identification, nomenclature and classification of organism. Mainly कौन होला ना टैक्सोनॉमी कौन गोटे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जोटा डील्स कला कोतरे ना स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आमे आगे प्रथमे धर जंगल को जाइछन्ती, फॉरेस्ट को गले तो फॉरेस्ट रे हम गोटे एनिमल देखी ताको प्रथमे कोन करिया आइडेंटिफाई करिया जेटा को एनिमल। तापर हमर जो कैटेगरी हे जे नोमेनक्लेचर हे गे थिबो आगुरु, तो आमे देखिबा ए प्लांट रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन कोन, ए प्लांट रो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहिला, ए प्लांट रो कैरेक्टरिस्टिक्स रो से एनिमल लो को कैरेक्टरिस्टिक्स से तो मैच करूची। तो आमे देखले तो ह्यूमन होमो सापियंस, आमे देखिले गोटे सिम्पांजी कोडी फॉरेस्ट। तो सिम्पांजी रो कैरेक्टर जदि होमो सापियंस सहित कोन हला मैच कल, देन सिम्पांजी को कैटेगरी गला होमो सापियंस बा ह्यूमन कैटेगरी। तो सेही हिसाब रे हम कोन करबा तार आइडेंटिफिकेशन करबा, नोमेनक्लेचर करबा आ ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन भी करबा। बुझियल? तो टैक्सोनॉमी नाम फादर बोली कहा कहनी ना कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टर्म के देथिले ना गिवन बाय एपीटी कैंडेले। सब बड़े शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम रे आसे मन रखिबो, कार्लोस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाय और टैक्सोनॉमी टर्म के देथिले एपीटी कैंडेले। तो आमे जो गोटे एनिमल हो किबा प्लांट स्पीसीज हो, आम जूलॉजी पढ़ुचंदी तो आम एनिमल कथा निहाती देखिबो, गोटे बॉटनी पिला प्लांट कथा देखिबो, गोटे माइक्रोबायोलॉजी पिला से माइक्रोब मान क्षेत्र देखिबो। तो ए जो माइक्रोब हो किबा प्लांट हो किबा एनिमल हो, तांकर क्लासिफिकेशन को मैं जानिबा पई, तांकर कैटेगरी को मैं जानिबा पई आमे कोन करले नोमेनक्लेचर करंती। बुझियला काहे के आमे नोमेनक्लेचर करंती? नेक्स्ट, व्हाई नोमेनक्लेचर नीडेड? हम प्रीवियस स्लाइड डिस्कशन करथिले काहे कि मैं नोमेनक्लेचर नीड करछंती, एबे हम ताको देखि देबा। तो आवर अर्थ बियर्स मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, द मोस्ट वेल नोन लिविंग थिंग्स हैव देयर लोकल कॉमन नेम। हम पृथ्वी कोन करछ मिलियंस ऑफ लाइफ बियर करछ। तो द मोस्ट वेल नोन लिविंग थिंग हैव देयर लोकल कॉमन नेम। जेमती आमर जति के स्टूडेंट अछंती, स्टूडेंट मानक नेम धर काहना राम होइतिबो, काना सीता होइतिबो, काना हरि होइतिबो। तो तांकर भी किछि कॉमन नेम थिबो कि नै, लोकल कॉमन नेम, ताको लोकल ले किछि ना धरि डाकुथिबे। सेमति जति कि भी हमर एनिमल अछंती कि प्लांट अछंती तार किछि लोकल नेम अछि। बुझला नै? आमे जेमति ह्यूमन बीइंग्स, कॉमनली आमे ह्यूमन बीइंग्स रो एग्जांपल न। तो ह्यूमन बीइंग्स हम कोन रखछंती? ह्यूमन बीइंग्स ओनली ह्यूमन बीइंग्स। जदि ए कॉमन नेम
जदि आउ किए कहा ना गला ह्यूमन बीइंग जदि हमें गोटे सिंपांजी कहले भी ह्यूमन बीइंग्स तो कौन है समान है गला एठी आसिला कौन द्वंद्व बा डिस्टर्बेंस धर जनक ना राम आउ जन ना राम सेम क्लास गोटे क्लास रे पढुचंती धर वर्तमान ईडी क्लास रे ईडी स्टार्ट क्लास रे दुईटी पिला राम अछंती सार गोटे एग्जांपल ले राम विषय कहले तो किए जानिबो से भी जानिबो ये भी जानिबो तो सार कहा को नहीं फोकस करी कहउचंती सेटा किए जानिबो मु धर कहली जे राम डेली भोर 5 टारू उठे जने राम उठुतो भोर 5 टारू जने राम उठुतो 8 टारे तो ई जो गोटे कैरेक्टर कहा फेस करा जो राम को फेस करा सी हला हो कोन से कैटेगरी पिला तो हेथि पय हम कोन कहन नोमेनक्लेचर नेटवर्क These local name differs from place to place which makes it difficult for scientists of different parts of world to recognize them. ये जो local name टा differ करते कौन place to place which makes it difficult for scientists जोटा कि हमारा scientist माना पे कौन है difficult है जे कौन ना पूरा whole part of world रे कितने हमारा लायन कैटेगरी केते अछंदी टाइगर कैटेगरी भी केते अछंदी आमे जदि समस्त कैटेगराइज न करिवा तो केमते जानिबा ना कोडा हमरो को कैटेगरी जाउची तो सेथि पे कोन कहन नोमेनक्लेचर हम कर दियंती नोमेनक्लेचर कले कोन हो साइंटिस्ट माना पे इजी हबो रिकॉग्नाइज करा पे गोटे एनिमल को कि गोटे प्लांट को कि गोटे माइक्रोब्स बुझिला सम डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स आर गिवन बिलो जो कॉमन नेम हम यूज करूचंती कॉमन नेम रो किछो डिसएडवांटेज हम देखियो minute and microscopic organism do not have any common name बहुत जोरा खाली एक देखा जांदी नाही जोरा को देखो ना माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म 0.001 नैनोमीटर माइक्रोमीटर इस ऑर्गेनिज्म को डू नॉट हैव एनी कॉमन नेम ताकर इज कॉमन नेम नाही हमें देखु जंती एडा होची बाघ आ कॉमन नेम टाइगर एडा सिंह आ कॉमन नेम लायन जेदा माइक्रो बैक्टीरिया जेते लैक्टोबासिलस एला साइंटिफिक नेम हला बासिलस थुरिनजेनेसिस ये हो जे साइंटिफिक नेम तार किछि कॉमन नेम ना बुझियला minute and microscopic organism do not have any common name an organism may have several common name at different place जेम जेम पूर्व एग्जांपल दो दिली an organism may have several common names गोटे ईडी स्टार्ट क्लास रे वर्तमान हमरो दुईटा राम आसीबे तो कौन हो सेवेराल कॉमन नेम हो गला ये भी राम से भी राम एटा भी गोटे कौन डिसएडवांटेज ए सिंगल कॉमन नेम मे बी गिवन टू मोर देन वन ऑर्गेनिज्म गोटे रु अधिक ऑर्गेनिज्म कौन होची गोटे सिंगल कॉमन नेम दिया जाउची जोटा गो डिसएडवांटेज आल्सो ए कॉमन नेम मे हैव डिफरेंट मीनिंग एट डिफरेंट प्लेस धरो आमे एठी कहिले आमे जन ना देले राम आमे जानछे कोन ताना राम हम कहले मानछे बट आमे एठी जो मीनिंग बुझिले अलगा जगह रे ताको अलगा मीनिंग बुझिबे आमे एठी आना दिजनी कोन बाघ को टाइगर सेठी भी से माने कोन कहउथिबे ऑल ओडिसा रे बाघ को कहले टाइगर बुझियला तो कॉमन नेम मे हैव डिफरेंट मीनिंग एट डिफरेंट प्लेस किछि अछन स्पेसीज जोटा कि हम कोन डिफरेंट मीनिंग प्लेस वाइज वैरी करे मीनिंग example some common name may be false example jellyfish cuttlefish silverfish are not true fishes हमर जेमि कोन हला काटला फिश हला हमर कोन रहला अनाबास ए सब जेमि ट्रू फिश सेमति जेलीफिश गोटे अछि गोटे कटलफिश गोटे सिल्वरफिश एरा केबे भी ट्रू फिश नु किंतु ताकर कॉमन नेम अछि बुझले नै हम कहि दिली जेलीफिश आज देखिलु आज सिल्वरफिश देखिलु आज कटलफिश देखिलु आमे कोन तार कॉमन नेम दैछन्ती किंतु तार साइंटिफिक नेम किछ नाही तो हेति पय कोन होछि ना ए जो कॉमन नेम हम दोजन तार डिसएडवांटेज एसो तो हेति पय हम नोमेनक्लेचर करबा और साइंटिफिक नेम दवा विथ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम जीनस एंड स्पीशीज देन असला हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी The history of taxonomy spans from early ancient attempt to categorize organisms to modern evolutionarily
ड्रिभेन क्लासिफिकेशन सिस्टम बुझे आम जदि कहवा बर्तमान ह्यूमन हिस्ट्री होमो सापियंस हिस्ट्री होमो सापियंस हिस्ट्री आम जदि बर्तमान स्टार्ट करवा एंशिएंट टाइम रे आम केमी थे बानर वाला देखा मांकड़ मंकी टाइप मंकी टू भी आहरी फास्ट टेल थिला लांजो थिला मांकड़ धीरे धीरे तांकर इवोल्यूशनरी चेंज हेई केते वर्ष परे आमे कोन हले होमो सापियंस रे कन्वर्ट हेले तो गोटे टैक्सोनॉमिकल हिस्ट्री हम जदि शो अप करबा बा देखिबा ता भीतर तीनटी फेज अछि फर्स्ट वन इज यार्ली क्लासिफिकेशन ऑफ एंशिएंट टाइम्स गोटे मिड सेंचुरी बा 18th सेंचुरी एंड लास्ट वन इज मॉडर्न टैक्सोनॉमी फर्स्ट हम देखिए यदि यार्ली क्लासिफिकेशन किए आसते ना यार्ली क्लासिफिकेशन किए करथिले फिलोसोफर लाइक एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस डेवलप्ड early taxonomic system grouping organism based on the observable physical character. In this era, classification were often artificial and based on simple criteria such as a plant's habit. Example: tree, shrubs, herbs. जदि हम देखिबा हिस्ट्री ऑफ टैक्सोन हमर यार्ली क्लासिफिकेशन ने कोन हला ना एंशिएंट टाइम्स रे के दो जन साइंटिस्ट मन नखो फिलोसोफर लाइक एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस डेवलप कले कोन यार्ली टैक्सोनॉमिक सिस्टम ऑर्गेनिज्म मानु से ग्रुप कले को बेस रे ना ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टर तांकर फिजिकल कैरेक्टर वा फिजिकल अपीयरेंस सेमानकर कैरेक्टर से कोन देखो शो अप करचंती सेमानकु से ऑब्जर्व करेगी ऑर्गेनिज्म मानको ग्रुप कले के एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस सबल परीक्षा रे क्वेश्चन आसे इन द एंशिएंट टाइम्स व्हिच साइंटिस्ट डेवलप्ड early taxonomic system के एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस in this era classification were often artificial and based on simple criteria such as a plant's habit से जो क्लासिफिकेशन हेतिला सर बहुत आर्टिफिशियल थिला आर्टिफिशियल माने कोन आर्टिफिशियल माने ह्यूमन मेड तो नो माने से माने नेचर को नहीं करथिले नेचर से तो कैरेक्टर कोन कोन शो करथिला गोटे ऑर्गेनिज्म अछि ऑर्गेनिज्म नेचर रहउछि तो नेचर वाइज तार कैरेक्टर कोन कोन से शो करूछि गोटे में नेचर को नेकी कैरेक्टर अछि तो तांको बेस रे से माने कोन करले प्लांट्स रो हैबिट को स्टडी करले बा एनिमल रो हैबिट को स्टडी करले प्लांट्स रो हैबिट रे से कोन करले ट्रीज श्रब हर्ब ट्रीज कोरा जोरा हमर बड़ बड़ गछ माने श्रब छोट छोट हर्ब ता छोट छोट बुझियला एनिमल हैबिट जदी कहबा सेमते एनिमल हैबिट अनुसार इसे क्लासिफिकेशन करले then after ancient times comes to mid 18th century in the 18th century another scientist Carolus Linnaeus considered the founder of modern taxonomy he introduced a hierarchical system and a formal method for naming species known as binomial nomenclature using a two-part Latin name genus and species एवं मु कहउतली हमरो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम गोटे साइंटिफिक नेम लेखिला बेले तार दुईटी टर्म रे ध्यान दे पड़े गोटे जेनेरिक नेम और गोटे स्पेसिफिक नेम तो इन द 18th century while Linnean revolution occurs he introduced a hierarchical system means कोन नेमिंग केमते हो किंगडम तापर हमरो सो फाइलम अछि मैं आगो स्लाइड रे देखे देबी तुम मनको एंड ए फॉर्मल मेथड फॉर नेमिंग स्पीशीज और फॉर्मल मेथड से बनेले हमें केमिति स्पीशीज मान को नेमिंग करबा बुझियला गोटे स्पीशीज आस्तिला दर ह्यूमन स्पीशीज नेमिंग केमिति करबा तो ह्यूमन स्पीशीज के नेमिंग करबार गोटिए प्रोसेस बा जेते भी स्पीशीज था एनिमल स्पीशीज से प्रोसेस को हला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर काहे कि बाइनोमियल काहे को हला
ना तांगर दीटा पार्ट गोटे जीनस गोटे स्पेसीज जेमती आमे जदि गोटे साइंटिफिक नेम लिखिबार फास्ट तरीका देखिबा तो कोन करबा आइदर इटालिक रे लिखिबो नाही तो कोन करबो अंडरलाइन कर दो बुझियला दुईटा अंक स्पेसिफाई अंडरलाइन करबो होमो अलगा सापियंस अलगा तो एटा कहारा साइंटिफिक नेम ना ह्यूमन साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बुझिला तो लिनियन रिवोल्यूशन ने कोन हला हमरो ना दीटा पार्ट लैटिन नेम हियर इज होमो अनदर वन इज सापियंस तो साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन हम जदि स्टडी करिबा तो एटा हमरो एटा गोटे लैटिन नेम होमो सापियंस तार दुईटा टर्म अछि होमो हला कोन जीनस पार्ट सापियन होछि स्पेसीज पार्ट बा एटा जेनेरिक टर्म एटा स्पेसिफिक टर्म बुझिला लिनियन रिवोल्यूशन after Linnean revolution come to modern taxonomy 19th century to present nowadays modern taxonomy also occurs so after 18th century Carlos Linnaeus गला परे modern taxonomy के आइले Charles Darwin the publication of Charles Darwin on the origin of species 1859 shifted the basis of classification from artificial or natural system to phylogenetic system reflecting evolutionary relationship and common ancestry बुझियला तो चार्ल्स डार्विन कोन गले ना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कले हमर केते 19th सेंचुरी टू प्रेजेंट क्लासिफिकेशन दा को बेस से कले ना फ्रॉम आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम टू फाइलोजेनेटिक सिस्टम बुझियला तो ये वाला मॉडर्न टैक्सोनॉमी Then हमें देखिए levels of classification by taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy कहले हमें कौन बुझेंदी? Now it is the arrangement of classificatory units in successive levels of the biological classification. It is also called Linnean hierarchy because it was first proposed by Carlos Linnaeus. Here is the diagram of taxonomic hierarchy. First one kingdom, then phylum, then class, then order, then family, then genus, and then species. If we give an example of Homo sapiens, then Homo sapiens means human. Human means kingdom कौन हला? Animalia बा animals. Animalia केस हम कौन कहले ना organism able to move, which is known as animalia. Then next kingdom phylum. Next phylum कौन? Chordates. Example here also Homo sapiens. So in the case of Homo sapiens, here also the taxonomic hierarchy. So तो किंगडम एटी कौन है एनिमलिया फाइलम है कैडेट्स क्लास है मामालिया क्लास मामालिया कहीं कहते ना कैडेट्स विदाउट मामारी मामालिया मीन्स कौन ना जो मैंने हमर कौन विविपारस बुझला ऑर्डर कौन है प्राइमेट्स फैमिली होमिनिडे जीनस होमो स्पेसीज होची सापियंस स्पेसीज होमो सापियंस नो जीनस होमो स्पेसीज होची सापियंस तो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची मींस हम कौन जानले ए जो डायग्राम हम देखी कौन हमें जानले ना इट इज द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेटरी यूनिट्स इन सक्सेसिव लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन ए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन the classificatory unit in successive levels mean
किंगडम टू स्टार्ट हला और स्पेसीज रे एंड हला किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पेसीज तो जो क्लासिफिकेटर यूनिट्स को हम कौन कहबा टैक्सोनॉमिक हायरार्ची हायरार्ची मींस कौन हमरो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस it is also called linear hierarchy because it was first proposed by Carlos Linnaeus so हम कौन कहंदी linear hierarchy बोले कहंदी the classificatory of any rank is known as a taxon बुझियला एग्जांपल हम नेले homo sapiens 1 minute please yes जदि हमें देखिबा किंगडम तो each kingdom plant हो किमा एनिमल क्षेत्र हो डिवाइड हला कोठी की फाइलम बुझियला फर्स्ट हला किंगडम किंगडम होचे हमरो गोटे बहुत गुडे प्लांट किमा एनिमल स्पीसीज को नै किंगडम हला किंगडम जदि डिवाइड हला कोठी की फाइलम फाइलम डिवाइड जदि हो स्मॉलर ग्रुप को से कोन हला क्लास जदि क्लास डिवाइड हला कोठी की ऑर्डर बुझला और स्मॉल हला जदि ऑर्डर डिवाइड हला फैमिली बुझले ने से और स्मॉल हला each family was divided into genus and species बुझला genus means कोन हमर homo in case of human genus means homo species means sapien बुझला ये जो फाइलम और फैमिली ये दुईटा किंगडम क्लास ऑर्डर जीनस स्पीसीज फर्स्ट भी अछि फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमर जते रहितला कोन हमर जते बेले थिला इयरली क्लासिफिकेशन सेते बेले हमर अछि कोन किंगडम फाइलम हला ना किंगडम क्लास ऑर्डर जीनस स्पीसीज बट फाइलम और फैमिली एटा हो जे हम लिनियस क्लासिफिकेशन ने नथिला परे मॉडर्न साइंटिस्ट ने को ऐड करछंतु फॉर योर कॉन्फिडेंस दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड किंगडम क्लास ऑर्डर जीनस स्पीसीज आगुरु थिला बट मॉडर्न साइंटिस्ट माने कोन दुईटा ऐड करछन गोटे क्लास ना गोटे फाइलम आ गोटे फैमिली बुझियला नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जदि हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जिबा तो क्लासिफिकेशन इज ऑफ 3 टाइप्स गोटे आर्टिफिशियल natural and phylogenetic classification first one is artificial classification artificial classification क्षेत्र रे हमें देखिबा के करथिले अरिस्टोटल तो अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ने टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची से दुईटा ग्रुप रे डिवाइड करथिले गोटे एनिमल्स विथ ब्लड एनिमल्स विदाउट ब्लड एनिमल्स विथ ब्लड कोन कला एनेमा एनिमल्स विदाउट ब्लड कोन हला 1 minute yes तो एनिमल्स विथ ब्लड को हम कहबा एनेमा एनिमल्स विदाउट ब्लड को भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखे देबे रा कोन कहै तो एनिमल्स विथ ब्लड रे कोन हला क्वाड्रुपेड हियर इज एन इंसेक्ट बुझले ने तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन few morphological traits एग्जांपल कोन हला अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन
आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इग्नोर्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन देम बुझिला। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मीन्स कौन ना आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन होची जेमते हमर अरिस्टोटल कोन करले एंशिएंट टाइम रे आर्टिफिशियल कोन करथिले क्लासिफिकेशन करथिले। तो सेमती इग्नोर्स इवोल्यूशन रिलेशनशिप तांका भितरे इवोल्यूशन रिलेशनशिप बोले किछि गोटे जिंस नाही। नेक्स्ट हम देखिबा कोन नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जेमि थिला कोन तांकर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स थिला एठी कोन बेस्ड ऑन मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जांपल बेंथम एंड हुकर सिस्टम के दुइटा साइंटिस्ट मन रखिबो नेचुरल क्लासिफिकेशन के करथिले बेंथम एंड हुकर। रिफ्लेक्ट सिमिलरिटीज इट रिफ्लेक्ट सिमिलरिटीज and not always show evolutionary relationship. In artificial classification it also not show evolutionary relationship and natural classification it also not show evolutionary relationship. It reflects similarities also. बुझला artificial similarity show करे ना but natural reflects similarities. In case of plant kingdom animal पढुचंदी गोटे प्लांट किंगडम पढ़िबा प्लांट इन केस ऑफ प्लांट किंगडम क्रिप्टोगामिया एंड फेनोरोगामिया बुझियला। प्लांट किंगडम डिवाइड्स इनटू क्रिप्टोगामिया एंड फेनोरोगामिया। फेनोरोगामिया इज डिवाइडेड into three types dicotyledon gymnosperm monocotyledon and dicotyledon is again divided into three type gamopetally monoclamidae एंड पॉलीपेटली बुझियला। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन हम एनिमल भी देखिबा सेमती क्लासिफिकेशन अछि। एनिमल क्लासिफिकेशन एक्चुअली हमर गोटे पूरा फुल क्लास हबो। तो एनिमल क्लासिफिकेशन मु नेक्स्ट क्लास रे एनिमल क्लासिफिकेशन फुल डिटेल्स पूरा तरह फुल डिटेल्स रो गोटे वीडियो अपलोड हबो बुझियला। तो आमे जो देखिबा तो एटा हला कोन नेचुरल क्लासिफिकेशन। देन आमे जिबा देन phylogenetic classification. Last one classification is phylogenetic classification. It based on evolutionary history, use fossil records and molecular data, complex and data intensive, most accurate classification. Sorry, it is based on evolutionary history. तीनटा दुईटा क्लासिफिकेशन गला आर्टिफिशियल आ गोटे नेचुरल। आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन दुईटा रे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शो करनथला बट phylogenetic classification is based on evolutionary history. It use fossil record and molecular data also. It is complex and data intensive. इस डायग्राम को phylogenetic tree means बैक्टीरिया गोटे डोमेन आर्किया एंड यूकारिया बुझियला। इन केस ऑफ बैक्टीरिया Aquifax, green filamentous bacteria, Planktomyces, Cyanobacteria, Proteobacteria, Spirochetes, gram positive. तो vast classification of phylogenetic classification is vast, complex and data intensive. Archaea रे कौन हला Methanosarcins, Halophiles, Methanococcus, Thermoproteus, Pyrodicticum. Eukaryote रे slime molds, animals, fungi, plants, ciliates, entamoeba, microsporidia, diplomonada बुझिला। तो सर एटा एक्चुअली कोन की हमें नेक्स्ट क्लास रे पूरा तर गोटे क्लास पर आबो बैक्टीरिया आर्किया आउ यूकैरियोटा। दिस इज आल्सो नोन एज बर्गिस मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। समझ में आया? तो हम बर्गिस मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन भी एक क्लास लेंगे जो कि बैक्टीरिया आर्किया यूकैरियोटा फुल्ली समझ में आएगा। नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक ट्री। प्रीवियस स्लाइड में हम जो देख रहे थे ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री है।
तो फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है? Phylogeny is the evolutionary history of a kind of organism. In phylogenetic studies, the most convenient way to study the evolutionary relationship among a group of organisms is through the illustration of phylogenetic tree. तो ये जो phylogenetic tree माध्यम में कौन देखिबा ना most convenient way to study the evolutionary relationship हमरो बैक्टीरिया हुंतु आर्किया हुंतु किंबा कौन यूकैरियोटा हुंतु तांको भितर जो इवोल्यूशन रिलेशनशिप अछि बुझले नै तो सेटा हमें फाइलोजेनेटिक ट्री माध्यम जानि परिबो बुझियला तो डेफिनेशन मन रखियो फाइलोजेनेटिक ट्री इज ए टू डायमेंशनल ग्राफ शोइंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म और जीन्स फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिज्म बुझियला फाइलोजेनेटिक ट्री तो इन दिस वी कंक्लूड दिस क्लासेस conclusion taxonomy is essential for biology. Classification organizes biodiversity. Tools are advancing rapidly, crucial for future ecological balance. बुझला तो some reference books. Concept of animal taxonomy by Dr. Umesh Bharti and Dr. Ravneet Kaur. So in this we conclude this topic taxonomy, and next we goes to fully animal classification and its binomial nomenclature, trinomial nomenclature, five kingdom classification, fully classification देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।